Okay, I've got he's saying state in terms of the number of subatomic particles what these three atoms have in common. So you've got three atoms. By looking at it, what do they have in common in terms of the number of subatomic particles? Nucleon number. The nuclear number is not a subatomic particle. Okay? In terms of the number of subatomic particles. So what is common? Which the protons are not common. The neutrons are also not common. I think nucleons, they have the same number of nucleons. I think that's the only one that makes sense. Okay, a nucleon is a particle, same number of. So they have the same number of protons plus neutrons. That's what the number of nucleons is. Okay, so what they have in the nucleus, that's the same. State fully in terms of the number of all subatomic particles, how these three atoms differ from each other. So how do they differ? The protons are different, the electrons are different, and the neutrons are also, I think, different. This is 22 neutrons, this is 21, and this one is 20. So all three are different. So you can just mention all three of them. Okay, that was kind of easy. This one is calculate the percentage abundance of the isotope. He's saying that a sample of sulfur contains only two isotopes. So there's S32 and S34. The relative atomic mass of the sample is 32.09. Now they did not give you the percentage. So you have no idea what the percentage is. So if I say okay, the 32 mass wala jo isotope hai, it's got a percentage of X. So the other one is going to have a percentage of what? 100 minus X, right? Is that clear? अगर ये 10% है तो दूसरा क्या होगा? That's going to be 90%. If this is 40%, this would be 60%, right? So how do you find the AR? The formula for AR is okay, you sum up the percentage, which is the fractional percentage, and you multiply it by the mass of the isotope or the isotopic mass. और उनको sum करते रहते हो. So the AR is already given. It's given as 32 dot. So this AR over here is already given. That's 32.0109. So that is the average. So what is the percentage? It's X%, X over 100 into 32. So that's 1. The next one is 100 minus X. So that one is 100 minus X divided by 100. And it's going to be multiplied by 34. Okay, so you have to solve this. I'm going to multiply everything by 100. So this comes out to be 3209. And this would be 32X plus 100 into 34 and minus what? Minus 34X. And then I'm going to solve this. This is 32X, sorry. So it's going to be 3209 and minus 3400. And on the other side, it's going to be minus 2X. I think it's going to be minus 2X, right? So what do I get for X? Come on, it's minus 209 equals minus 2X. Hopefully I'm doing the math correctly. So it's this entire thing would be divided by 2, and I think I'm not getting the right number. Just 1 second. Did I do the math properly? Okay, there are only 2 isotopes. So if this is X%, the other one would be 100 minus X%. So this math, make sure I did this correctly. So the average coming, Sir, 3209 minus 3400 का बनता है minus 191. वही मैं को गलत किया minus 191. Yeah, 191. So X की value क्या आ रही है? What are we getting for X? 191 divided by 2 is what? Minus 95.5 आ रहा है. 95.5. 5%. ठीक है, तो remember this formula. Okay, it's if you want to calculate the average, it's the isotopic mass multiplied by the fractional percentage. ठीक है? अच्छा, just 1 second, एक और मैं वो
कहाँ पे 1 3 1 second. इसको मैं ऐड कर लूँ so that it opens up in time. चले. That's the next one. Now he's saying identify which orbital in the sulfur atom has the lowest energy. That's pretty easy. It's first one, right? Right? Is that clear? First shell, that's the lowest energy. Sketch the shape of a p orbital. That's also easy. There's a nucleus and there's it's going to have 2 lobes. That's about it. अगर वो specific होता ना कि he had said कि draw px or py or pz, so draw an axis and then show कि if he had said कि draw a pz, तो फिर थोड़ा सा वो axis वगैरह show कर देना कि this is x, this is y, and this over here is the z-axis, and then show that this is what a pz orbital looks like. ठीक है? Is that clear? सर हाँ. सर पी ऑर्बिटल के अंदर हम लोग अगर वो सर पी ऑर्बिटल का क्या हम सारे बनाते हैं पी एक्स पी वाई पी जी, फिर तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता ना, या हो जाता? हो जाता है क्योंकि अगर तीनों ड्रॉ करते ना तो दैट वुड हैव बीन अ p subshell, not a p orbital. ठीक है? वो he was very specific about a p orbital because that would mean that you don't know what a subshell and what's the difference between a subshell and an orbital. ठीक है? A subshell is a group of orbitals. ठीक है? Is that clear? यस Achha, identify the orbital from which this electron. You're removing the first electron, so this it's being removed from this one 3p. पी. Achha, like you have to be specific. He's talking about not the subshell. This is the subshell. 3p4 से remove हो रहा है ना. 3p4 is 3px, 3py, 3pz. If it has 4 electrons, so this is how the orbitals would look like. This is what 3p4 looks like. अब मैं बताऊँ कि if I remove an electron, so which orbital would I remove the electron from? It's going to be let's see, PX. 3px, right? Achha, so I'm not sure if he just wanted the p orbital in this answer, or was he more specific? Achha, anyways, I can't open them. Can anyone open them? Huh? सर लेकिन वो तो सबशेल की बात नहीं कर रहा, वो तो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं. The orbital की ना, तो is he talking about p orbital generally, like the electron is being removed from a p orbital? Because the explanation makes no sense. I mean, there is no explanation for this. It's just you're removing the outermost electron from the highest energy. So I'm not sure what the explanation is. Okay, it's such an obvious answer that ढूंढते हैं इसका अगर answer मिल जाए. Just a second, because the answer is so obvious that why are they even looking for an explanation? अच्छा, कौन सा था? This is where's the paper? I just try and open the. This is summer 1923. 1 second. Summer 19 _ ms _ 23 PDF. So नहीं, अब speed थोड़ी पकड़ ली. It's working now. So this one. Now it's opening. Now it's working. I just saw this one. So I was just wondering about the explanation. He was very general about it. He just said CP. That's it. He wasn't very specific. So it's a third shell p orbital, and or it's the highest energy orbital. That is what I said. Okay, it's the highest energy orbital. That would have been the explanation for this. That the electron is removed from the outermost highest energy orbital when you're trying to remove electrons. So now the next question is, on the complete diagram to show the arrangement of electrons within the third shell of a phosphorus atom. Third shell, it was 3s2. So, and 3p4. So that meant 1 electron each, and then the first one would be paired. Okay, so the electronic configuration was 3s2 and 3p4. Explain why the first ionization energy of sulfur is less than that of phosphorus. So why is
वो डिप आती थी. If you remember across the period, what would happen was that group 1, 2, third पे there's a dip, and then there's 4 and 5. फिर sixth पे there's a dip, and then 7 and 8, right? So sulfur is over here and phosphorus is over here. So why do you think it's easier to remove electrons from this? What's the reason for that? सर क्योंकि वो वहाँ पे पेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए. ठीक है, तो एक तो बताना है कि सल्फर में there's a paired p orbital. I mean, you're removing electrons from a paired p orbital. और उसको कंपेयर भी करना है फास्फोरस के अंदर. फास्फोरस के अंदर it's 3p3, so it's one each. पेड में क्या होता है? There's electron pair repulsion, or you can say spin pair repulsion. Spin, अच्छा हाँ. सर, अगर दो सब शेल में स्पिन पे रिपल्जन इस तरह से हो सकता है, और उसका फिर क्या होगा? नहीं नहीं, वो एक ही ऑर्बिटल में होता है ना. इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिटल में इकट्ठे होते हैं ना, वरना तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी अलग अलग जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना. ये 3p पे बैठा हुआ है, जी पे बैठा हुआ है, तो जगह उनकी जगह अलग अलग है ना, स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में. क्लियर है? नहीं सर, एक्चुअली लाइक वो वहाँ पे 3p लिखा है, लाइक 3px में सिर्फ नजर आ रहा है. अगर वो 3py में भी दो स्पिन पे पेड इलेक्ट्रॉन है तो. हाँ, तो उसमें भी स्पिन पे रिपल्शन होगी, लेकिन फिर उसमें और सल्फर में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वो स्पिन पे, वो तो कॉमन फैक्टर हो गया ना. तो वो उनमें फिर मतलब सल्फर से आगे इसमें डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि स्पिन पे रिपल्शन यहाँ पे भी है, स्पिन पे रिपल्शन यहाँ पे भी है, स्पिन पे रिपल्शन उसके बाद वाले में भी है. समझ आई बात? तो वो तो सर इससे आयनाइजेशन एनर्जी लाइक फर्दर लाइक ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज ऐसे नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि वो फैक्टर कॉमन हो गया ना. कि अगर लेट्स से सारों में शील्डिंग है, तो फिर सारों में शील्डिंग है, वो उनको डिफरेंशिएट तो नहीं कर रहा ना. वो तो पहले वाले में भी शील्डिंग है, दूसरे में भी शील्डिंग है, तीसरे में भी शील्डिंग है. ठीक है, तो उसका आप मतलब अक्रॉस द पीरियड आप क्या कहते हो? शील्डिंग कांस्टेंट है ना, क्योंकि सारों में शील्डिंग है. सारों में 2 शेल्स हैं, या अगर फास्फोरस के केस में 3 शेल्स हैं, तो क्लोरीन के पास भी 3 शेल्स हैं. वो पहला जो होगा ना, जो सोडियम होगा, उसके पास भी 3 शेल्स हैं. तो जो फैक्टर कॉमन हो जाता है, वो तो फिर उनको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा ना. समझ आइए बात? यस. तो सल्फर के बाद अगर क्लोरीन आता है ना, तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस है ना, वो स्पिन पे रिपल्शन की वजह से नहीं है, क्योंकि स्पिन पे रिपल्शन इज कॉमन, वो दोनों में ही है. ठीक है, क्लियर है? यस सर. तो उनमें डिफरेंस क्यों है? उन दोनों में डिफरेंस इसलिए कि क्लोरीन के पास प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है. ठीक है. अच्छा, ग्रुप 17, iodine is a solid, has a lattice. Describe the arrangement of iodine molecules within the solid. So एक मार्क है इसका, प्रॉब्ली क्या अरेंजमेंट होगी? रेगुलर अरेंजमेंट. अब अरेंजमेंट का उसने क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिखने की तो जरूरत नहीं है. तो रेगुलर अरेंजमेंट इसका मैं वो देख लूं कि वो तो शेप टाइटली पैक्ड होंगे ना? टाइटली पैक, लेकिन वो शेप तो नहीं कह रहा, क्योंकि NaCl उनकी ना शेप्स, क्योंकि 20 नहीं, ये 19 का क्वेश्चन है ना. किधर हमारा पेपर? कि कुछ लैटिस नहीं, बस ठीक है. वो कुछ जगह में ना बुक्स पे लिखा हुआ है लैटिस की ना शेप्स वगैरह, जैसे NaCl जो होता है ना, स्क्वायर लैटिस होता है उसका ना. तो वो लेकिन कोर्स में है नहीं, सिलेबस में एटलीस्ट नहीं है. तो उन्होंने बस वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ है, उसने बस जनरल वर्ड यूज किया हुआ है. बट लेकिन जस्ट रिमेंबर कि वैसे मैं कह देता हूँ, ऑल्दो बुक में कुछ जगहों पे लिखा हुआ है, तो इसलिए रॉजर नॉरिस की जो बुक है, दैट्स कैम्ब्रिज, वो, लेकिन सिलेबस के अंदर इट्स नॉट मेंशन्ड. सो तो इसलिए यू नेवर गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस. अगर मैं वैसे डिस्कस करूँ ना, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कि लैटिस तो होता है, ये जो NaCl है ना, दैट्स गॉट, इफ यू कैन सी ओवर हियर, और अच्छी बात है इंटरनेट भी चलने लग गया. ऐसे इफ यू सी ओवर हियर, इसमें 1:1 रेशियो होता है. इट्स अ वेरी it's a regular square cubic lattice, sorry. तो तो इसको क्यूबिक लैटिस कहते हैं. मैं वर्ड देख रहा था कहीं पे लिखा हुआ है. अच्छा, इट्स अ वेरी क्यूबिक लैटिस. उसका अगर मैं कहूँ ना, लेट्स से मैग्नीशियम ऑक्साइड, आई एम नॉट श्योर कि उसका लैटिस की शेप कैसी है.
and shape as well. वो भी क्यूबिक है कि नहीं? It looks cubic. Well, it is cubic. हाँ, वो लिखा हुआ है cubic है. ठीक है, it's cubic. So that is also cubic. Aluminium oxide उसकी बड़ी अजीब सी होगी क्योंकि उसमें ratio of ions is different. It is a regular arrangement. तो it's a hexagonal crystalline lattice. मतलब उसकी जो shape है ना, that's completely, if we can see the shape somewhere, वो इस तरीके की है. ये बल्कि कहाँ पे सही पता लग रही है. बस वैसे ही मैं आइडिया दे रहा था. ये इधर इधर कुछ आइडिया पता लग रहा होगा इसके अंदर ना. तो एल्यूमिनियम आयंस और ऑक्साइड आयंस जो है ना, वो थोड़े अजीब से ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं. ये सिल्वर और एसी की शेप है. ठीक है. सो रिमेंबर, इट्स नॉट ऑलवेज क्यूबिक. आई मीन you've always seen a cubic lattice. जब भी आप बुक पढ़ते हो ना, तो you always see NaCl, and NaCl is obviously cubic. लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कुछ इस तरीके से ना, वो अजीब सी रेंज, मतलब रेगुलर होती है बट it's not cubic. Is that clear? यस सर. अच्छा, लेकिन अगेन वो बुक में एक दो जगहों पे बस लिखा हुआ है. अगर नो वन इज गोइंग टू आस्क यू रेगुलर अरेंजमेंट, उसने we just saw the marking scheme as well. It was just regular arrangement. That's it. One mark. अच्छा, then you have, ये पता नहीं किस तरह का पेपर. इट्स वेरी इजी. ये तो कोविड वाला भी नहीं है. It's before COVID. So anyways, this one. List all forces of attraction present in iodine and identify which one. So forces of attraction present. Iodine का जो molecule है, that's got a covalent bond. So that's one force. So it has a covalent bond. फिर iodine के अंदर एक और force भी है. वो क्या force है? What is the force that exists between one iodine molecule and the other? इंटरमॉलिक्यूलर. नहीं, लेकिन what is that force? मतलब ये intermolecular force तीन टाइप्स की होती हैं. There's hydrogen bonding, there's van der Waals forces, there's permanent dipoles. Which one is this force? सर डायपोल्स होंगे. नहीं, लेकिन कौन से डायपोल? परमानेंट है या टेम्परी डायपोल है? क्या है? सर टेम्पररी होगा. टेम्परी होगा. वैसे तो डायपोल होगा नहीं. इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. it's going to be van der Waals forces. ठीक है. दिस वन इज गोइंग टू बी van der Waals forces. तो दो फोर्सेस होंगी. तो वो जब कह रहे हैं कि आयोडीन वेपर बनता है, तो जब भी आप कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करते हो, you change the state. So what is breaking? It's not the molecule that's breaking, it's the intermolecular forces that are being broken. Is that clear? सर. हाँ जी. सर आपने अभी कहा है कि इसके अंदर जो टेम्पररी डायपोल आपने कहा है ना, तो अगर हम लोग सिर्फ डायपोल लिखते हैं तो उसके सब मार्क्स पर डिडक्ट होंगे ना. हाँ, but temporary dipole, induced dipole, that's the proper word. ठीक है. तो remember this, water का molecule जब evaporate करता है, so it's not the bonds that you're breaking. You're not breaking the covalent bonds. What you're breaking is the intermolecular force, and you have to be very specific what the intermolecular force is. In this case, it's going to be hydrogen bonding. ठीक है. तो as a diagram shows the arrangement of outer electrons of Al2I6. How many coordinate bonds are made when a molecule of Al2I6 is formed from its atom? So Al, ये इस तरह बनता है. You've got Al. We did this for Cl. The same thing applies to iodine as well. Iodine के पास has lone pairs. Group 7 में it's got 3 lone pairs. This iodine over here has 3 lone pairs. Aluminium का outer shell, that's not complete. So what happens is they end up forming a dative bond. These two also end up forming a dative bond. Is that clear? ठीक है. So they end up forming dative bonds. अब ये कि how many coordinate bonds? There's going to be 2 of them. ठीक है. This one I think is a dative bond, and this one over here is a dative bond between iodine and Al. The fourth one. Is that clear?
And how do coordinate bonds form? That's again 1 mark. So you're going to state that the lone pairs on iodine, they get attracted to, or they form dative bonds with aluminium, which has an incomplete octet. उसके 8 electrons पूरे नहीं होते. So it forms, the lone pairs get donated from iodine and they end up forming a dative coordinate bond with aluminium, which has an incomplete octet. ठीक है? Is this clear? तो ये dimerization का पता होना चाहिए. Is this clear? This is clear. Time clear है? सर हाँ जी. सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन का इशू आ गया था. नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है AlCl3 की डाइमराइजेशन जो है ना, दैट्स डेटिव बॉन्डिंग में, दैट कम्स वेरी ऑफन. AlCl3 में क्या होता है, Al का आउटर शेल कंप्लीट ही नहीं होता क्योंकि Al हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 होने चाहिए. ठीक है? तो there is another AlCl3 molecule. तो क्या होता है कि lone pairs from Cl they get attracted to aluminium. The lone pairs from Cl get attracted to aluminium. Is this clear? यस सर. अच्छा, अगला क्या है कि in reaction, ये वो sulfuric acid वाला है. If you remember, explain with oxidation number why this is a redox reaction. You may wish to write an equation for this reaction. Writing the equation is kind of difficult because it's a redox reaction. HI reacts with H2SO4. So if I make this equation, अच्छा, HI reacts with H2SO4. The products are hydrogen sulfide, तो वो H2S है. The other one is sulfur and iodine and water. So you've got sulfur and you've got iodine and you've got water. So now this one, you may wish to use oxidation numbers to help you. So this one is kind of I mean, making the equation, you got 1 mark for this. Okay, but balancing is kind of going to be very difficult. Why is it going to be difficult? Because you have to use oxidation numbers, electrons lost and gained. So iodine goes from -1 to 0. So how many electrons did it lose? कितने हुए? वन. अच्छा, it lost 1. तो it lost 1 electron, -1 कर देते हैं, into 2 भी कर देते हैं क्योंकि इसको बैलेंस कर लेते हैं. ठीक है, 2 iodines हैं. So coming back to the rest of the equation, शायद easy because the number of electrons gained and lost must be equal. अच्छा, this is +6, this one is -2 and this one is 0. अच्छा, although ये equation जो है ना, this is part of your of the inorganic notes I gave you. It's part of that, and you have to remember this equation, but balancing this would be a whole different story. So +6, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन. नहीं, disproportionation नहीं है, it's वो एक ही reduction ही हो रही है दोनों जगहों पे. But the sulfur जो है ना, it's going from +6 to -2. That's a gain of how many electrons? 8 electrons, right? Sulfur also at the same time is going from +6 to 0. So that's a gain of कितने electrons? 6 electrons, right? You clear? 6. अच्छा, अब मसला ये कि पहले मैं सल्फर को जरा बैलेंस करूँ ना, सल्फर और वाटर को भी बैलेंस कर लेते हैं. आयोडीन पे हम बाद में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस अभी बराबर नहीं हो रहे. कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड. यहाँ पे लॉस कितने हुए? 2. इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस मस्ट बी इक्वल. मैं सल्फर को वैसे ही बैलेंस कर लेता हूँ. लेट्स से इसको इस साइड पे, राइट साइड पे 2 सल्फर्स है ना, सो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है, अच्छा, तो सल्फर हो गए बैलेंस. हाइड्रोजन कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 हो गए. तो अगर मेरे पास 8 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पे 8 होना चाहिए ना. ये भी क्लियर है? तो दे शुड बी 8 हाइड्रोजन्स, सॉरी 8 ऑक्सीजन्स. तो मैंने सल्फर को तो चलो बैलेंस करने की कोशिश की है, सल्फर बैलेंस हो गया. नाउ इफ आई हैव 8 हाइड्रोजन्स ओवर हियर, 16 हो गए. यहाँ पे कितने हैं? 4 है. ठीक है, इस जगह पे 4 है. यस.
तो 16 में से 4 निकालो तो इधर कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए ना? 12। अच्छा, तो इधर हम 12 कर देते हैं। अच्छा, मैं सल्फर से शुरू हुआ था, आयोडीन पे अभी मैं नहीं आया। बट एट द एंड ऑफ द डे the electrons gain and loss, they must be equal. ठीक है, तो I just assume कि let's say I had one sulfur and one H2S, तो I would need two H2SO4s क्योंकि दो सल्फर्स होने चाहिए। अच्छा, so if I wanted that, now if I have 12 iodines, तो electrons gain और loss तो अभी भी बराबर नहीं हुए। कि if I have 12 iodines, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि each one was losing one electron, right? तो अब अगर 12 हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कितने हो जाएंगे? वो 12 हो जाएंगे। सो इट्स स्टिल नॉट इक्वल, इट्स स्टिल वो डिफरेंस आ रहा है। तो द इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट आर स्टिल नॉट इक्वल। आई हैव टू समहाउ मेक द इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट इक्वल। तो क्या करें उसको? वो 6 है या 8 है, तो कितने हो गए? 14 हो गए। तो बराबर कैसा करें? इधर 14 आना चाहिए ना, कहीं गलती से हमने गलत तो नहीं किया हुआ? ये 14 ही आएगा। जस्ट वन सेकेंड। 8 हाइड्रोजन 16, दो ये भी थे तो 18 हो गए। 18 में से 4 निकालो तो यहाँ पे 14 ही आना चाहिए। दिस शुड बी 14। ठीक है, दिस शुड बी 14। अब इसको 14 से मल्टीप्लाई करो तो नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, दैट्स इक्वल। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि व्हेनेवर यू हैव अ redox रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द डे जो भी आप बैलेंसिंग करो, at the end of the day the number of electrons that are being lost and the number of electrons that are being gained, they must be equal. तो इस केस में हमारा पहला तुक्का लग गया था, मैंने बस अज्यूम किया कि ये एक है और ये एक है। तो दो सल्फर्स हो गए, there two sulfurs, so there should be two sulfurs over here as well. I multiplied this by 2. ठीक है, that was just a random start. ठीक है, I didn't know if I had one of this or and one of this, I just assumed that. तो so when I had two H2SO4s, I figured out there would be 8 oxygens. तो ऑक्सीजन और कहीं पे भी नहीं है, इधर है, so there should be 8 water molecules. If I have 8 water molecules, that's a total of 16 hydrogens. और दो ये भी मिला, so that's a total of 18 hydrogens. So 4 hydrogens are over here, so there should be 14 over there. So when I used those numbers, एक चीज अभी missing है, iodine, this should be 7I2, right? So now the last thing is, are the number of electrons gained and lost equal? Sulfur goes from +6 to -2, that's 8 electrons. Sulfur goes from +6 to 0, that's 6 electrons being gained. So that's a total of 14 electrons being gained. यहाँ पे I have I-1 going to 0. That's a loss of 1 electron. So if I have 14 of them, that's a loss of 14 electrons. So the number of electrons gained and lost are equal. Is this clear? सर हाँ, सर वो HCl के केस आपने डिस्प्रोपोर्शनेट समझाया था, वो कैसा था? वो इस तरह से नहीं था? नहीं नहीं, इस डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है जब एक ही एलिमेंट ऑक्साइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो। इधर सल्फर जो है ना, दोनों जगहों पे रिड्यूस ही हो रहा है। इधर वो 8 इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे वो 6 इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हो रहा है। वो वाला था ना, वो ये था, इट वाज रिएक्टिंग विद Cl2 and it was forming NaCl plus NaClO3 plus H2O। इसमें क्या हो रहा था कि Cl goes from 0 to -1 but Cl also goes to +1, यानी वो रिड्यूस भी वही हो रहा है और ऑक्साइज भी वही हो रहा है। मतलब ये +1 नहीं है, सॉरी, दिस इज +5। ये क्लियर है बात? यस। अच्छा, ये वैसे हम देख भी लेते हैं हमने किया भी सही है कि नहीं किया। गलत ही ना निकला वैसे तो। इलेक्ट्रॉन्स नहीं वही आया, 7I2 आया था ना, हाँ 8 वॉट है। अच्छा, लेकिन इसमें भी हमने जो स्टार्ट किया था ना, हमने बिल्कुल एक तो कैसे किया था, क्योंकि मैंने तो बस अज्यूम किया था कि मेरे पास आई हैव वन H2S एंड आई हैव वन सल्फर। मतलब हमें कैसा पता कि तो हमने बस एक तुक्का ही लगाया था कि जैसे हमने स्टार्ट किया था, वो एंड में बैलेंस खुद ही होगी। वो फिर तुक्का चल गया, वो यहाँ पे 14 आया तो एवरीथिंग गॉट बैलेंस्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो गॉट बैलेंस्ड। ठीक है,
Like, is this clear that you always have to make the number of electrons gained and lost equal? मतलब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ. Cl is gaining how many electrons? -1. It gains 1 electron, right? Cl on the other hand over here loses 5 electrons. तो equal होना चाहिए, so इसको multiply by 5 करना पड़ेगा. So that means there should be 5 Cl minus 1 ions. तो Cl से start where there should be 5 Cl minus 1 ions and there should be 1 Cl plus 5. तो total Cls कितने हो गए? Which 6 हो गए, तो there should be 6 Cls. 5 of them turn into -1 and 1 of them turns into +5. So the number of electrons gained and lost are equal. Is this clear? Yes, sir. बाकी ये भी आसान है. Use redox. So just use redox numbers. This is reduction. This is oxidation. -1 to 0. और redox जब भी explain करना, remember it's an explanation of gain and loss of electrons. You have to use those words whenever you have to explain redox. So moving on, state 2 observations when magnesium is heated strongly in oxygen. तो magnesium, अच्छा इसकी ना 2 observations होंगी. This is a white solid. That's one. The other one is there's going to be a bright white flame. वैसे notes भी देख लेते हैं flame test जो है इसके. Inorganic chemistry. Where's inorganic सर वो chemistry? फर्क तो ये है ना कि एक एक्सेस में एक लिमिटेड है. कौन सा? लाइक ऑक्सीजन एक में एक्सेस में और दूसरे में लिमिटेड है. लिमिटेड में तो मैं नहीं देखा. किस में तुम कह रहे हो? ये मैग्नीशियम वाले क्वेश्चन में? नहीं, हाँ मैग्नीशियम वाले क्वेश्चन. अच्छा एक सेकंड पहले वो मैग्नीशियम का ब्राइट व्हाइट फ्लेम होता है ऑक्सीजन में. एक सेकंड मैं पहले वो देख लूं क्योंकि फ्लेम टेस्ट मुझे यूजुअली याद नहीं होता क्योंकि उसके क्वेश्चंस ही बड़े कम आते हैं. कहाँ पे उनका फ्लेम टेस्ट? ये व्हाइट फ्लेम है, ठीक है. नॉट ब्राइट व्हाइट बट जस्ट व्हाइट फ्लेम. वापस आ जाओ क्वेश्चन पे. किधर है क्वेश्चन हमारा? State 2 observations that would be made when magnesium is heated strongly placed in a gas jar of pure oxygen. तो वो excess और limiting कहाँ से आ गया बीच में? उसकी तो उससे बात ही नहीं की. उसने बस कहा कि मैग्नीशियम को. सॉरी वो असल में H2O और इसको इससे कंफ्यूज कर देता ऑक्सीजन से. अच्छा ठीक है. तो व्हाइट सॉलिड होगा और व्हाइट फ्लेम होगा. ये 2 ऑब्जर्वेशन होंगे. लेकिन क्वेश्चन तो एक ही मार्क का था. But he was asking for 2 observations. So there's going to be a white flame. It's going to burn with a white flame. So remember inorganic notes. इनका रट्टा लगाना है, ठीक है. You have to memorize all of this. Group 2 की थोड़ी सी बातें you have to memorize. How do they react with water? उनके pHs वो सारी. अच्छा बाकी है कि किधर गया क्वेश्चन? Give. अच्छा acid digestion indigestion is caused by an excess of hydrochloric acid. ये वाला था in the stomach. So give an equation to show how magnesium oxide relieves acid indigestion. तो magnesium oxide stomach में कौन सा acid होता है? Stomach के अंदर what acid do you have in the stomach? HCl होता है वैसे. तो it's going to form. Name the type of reaction. Neutralization. कि वो acid जो है ना वो neutralize हो जाता है. That's it. So magnesium oxide is described as a ceramic material. It has high melting points. State and explain why ceramics like magnesium oxide have high melting points. क्योंकि it's got very strong ionic. Ceramics जो है ना वो 2-3 materials हैं. There's magnesium oxide. हाँ. सर वो ऊपर वाला टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है वो? न्यूट्रलाइजेशन है ना. एसिड बेस्ड रिएक्शन है. अच्छा ceramics. Remember ceramics. What are ceramic materials? Ceramic materials are those materials that have very high melting points. यानी furnaces बनाने हैं, spaceship की बनानी है कि re-entry के अंदर वो burn ना कर जाए, ठीक है. Something that does not conduct heat, something that is very strong and is also a poor conductor of electricity. Like अगर high voltage transmission use कर रहे हो
तो अगर आपने वो जो इलेक्ट्रिसिटी पाइलन जो है ना, वो उसके जो होल्डर्स हैं वो वुड से बनाए ना, तो वुड वुड बर्न अप बिकॉज द वोल्टेज वुड बी सो हाई. तो यू वांट समथिंग दैट इज holding the wires that is very very resistant to, and it's very tough. So silicon oxide, which is basically clay. I mean, you've made ovens out of clay, and you've used clay in lots of places. ठीक है, तो even you use it for cooking. The reason you use it for cooking is it's not going to get damaged. So clay is one thing, sand. It's got very high melting points, and there's a reason for that. It's a giant covalent structure. It doesn't conduct electricity as well. The other one, ये जो दो है ना, these are ionic substances, and they're very tough ionic substances. Like magnesium oxide, the charge density of the ions is very high. So, which is why the attraction, they have strong ionic bonds. So it's got very high melting points. It's almost as high as diamond. So they've got strong ionic bonds. NaCl का weak होता है. NaCl का weak क्यों होता है? क्योंकि उसका charge कम है. Na+1 और Cl-1, they don't attract each other that much. ठीक है? So this one is a weak lattice. तो magnesium oxide, so that is not used as a ceramic. It's a weak lattice. जल्दी melt हो जाएगा. Magnesium oxide has strong ionic bonds. Ions have high charge density. बस ये काफी होगा. It's just a 2-mark question. Aluminum oxide has very high melting point because the lattice of aluminum oxide, the charges are very high. They have high charge density, so they attract each other very strongly. Clear है? Plus, it's a giant ionic lattice. ठीक है? Is this fine? सर हाँ. सर वैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्या चार्ज डेंसिटी होती है? ये वैल्यू क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती क्या या है? सर नहीं, वैल्यू तो कोई नहीं. वैल्यू तो कैलकुलेट करनी पड़ती है. डिफरेंट तरीके. वो तो कोई मतलब कैलकुलेट करने का हमारा डेटा ही नहीं है इसको हम कैलकुलेट करें. चार्ज डेंसिटी होती क्या? It's how big the charge is and how concentrated the charge is. Smaller ion के ऊपर, if you have a greater charge, that's high charge density. Clear है बात? ओके सर. इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी ना, क्योंकि इसका चार्ज ही कम है. Na+1 है. +1 is not going to attract -1 that strongly. इसलिए तो ये डिसॉल्व भी हो जाता है बड़े आराम से. पानी के अंदर चम्मच से हिलाओ ना, तो ये सारे आयंस अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है? दे ऑल गेट स्कैटर्ड. ठीक है? अच्छा, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दैट इज डीकॉम्पोजिशन प्लस CO2. तो ये इधर नोट्स में, इट्स this is the reaction. A metal carbonate would turn into metal oxide plus carbon dioxide. चले ठीक है. Let's continue tomorrow. Hopefully my internet starts working properly. हाँ जी. सर वो उसके अंदर वो एल्केन्स का जैसे खत्म हो जाता है तो आप उसके अंदर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा देंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ है नहीं वैसे. मतलब वो मैं करवा दूंगा. उसमें उसमें वो सारा A2 के अंदर है. AS में तो बस ये रीडॉक्स है, जो बैलेंसिंग नहीं है, रीडॉक्स. ओके सर. इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं. चलो ठीक है, वो कल करते ओके सर. अल्लाह हाफिज़. हैं.